Okay, that is okay. Okay, so let us start your snap review. So first of all, just define me the second law of thermodynamics. How do you define it? Sir, second, okay. Hmm. Second law is the law of degradation of energy. It tells Hmm. about the direction of heat flow, and it consists of two statements: Kelvin-Planck statement and Clausius statements. Okay, just explain me the closest statement. Okay, sir. According to Clausius, Clausius Hmm. statement says that if a system is working, if a system is working operating in a cycle, and it is impossible to produce that system which is operating in a cycle and it transfer heat from low temperature to high temperature without any external aid. Any input should be given, otherwise it will not transfer it. Okay, so tell me, is it possible to transfer the heat from low to high temperature in a process by doing some work input? No, sir. In a process, it cannot be done. In a cycle, it can be done. Why it can't be done in a process? So because the natural process is transfer of heat Hmm. from only high temperature to low temperature. In a process, it is a single step, so we cannot transfer. But in a cycle, it consists of a series of processes. So we can add input, work input at some stage, so it can be transferred. Okay, that is okay. Okay, just define me the evaporator. What is evaporator here? Sir, evaporator is a device which is used Hmm. to Hmm. to, to produce the refrigeration effect at a particular desired space, and it contains low pressure. It has the refrigerant at low pressure and low temperature, so it absorbs the heat. It give it to refrigerant, and then refrigerant boils at that temperature. Okay. Okay, just tell me one thing. Let us suppose if there are two VCRS plant, okay, two plants which are operating on the VCRS plant, and here let us say if I'm doing the superheating in both the cases by same amount. Okay, in first case you are doing the superheating in the heat exchanger, and then another case you are doing the superheating in the evaporator. Then out of these two, which will be more efficient? Okay, sir. One Yes, just take your time and tell me. this amount of superheating is same, sir, for both. Yes, the amount of superheating is same for both the cases. Sir, in both the cases, the COP will be same because the work input is also same, and Hmm. refrigeration effect is also same for both. Okay, okay, that is okay. Okay, tell me the components required for improving the VCRS plant. Components. Yes, Sir, component. flash chamber is required Hmm. for improving the COP because the use of flash chamber is to separate the vapor and the liquid refrigerant at a low pressure at absorption phase. So it separates. So Hmm. it also reduces the size of evaporator. Okay, okay. Just wait a minute. Yes. Okay, okay. So tell me, what is psychometry? So psychrometry is a branch of science that deals with the properties of moist air. Properties of the moisture. Okay, okay. Just draw a TS diagram. Okay, and just take a case of unsaturated air, and also represents the dew point temperature, wet bulb temperature, and dry dew and wet bulb temperature on that particular graph. Okay. Okay, tell me why the wet bulb temperature is more than the dew point temperature here. So wet bulb temperature, so it is an intermediate. It is at intermediate pressure. So that's why it is between the It is DPT and an intermediate pressure. it is at intermediate pressure, sir. Yes, why the it is an intermediate temperature pressure? That's my question. So I'm not sure about it. Okay. Okay, that is okay. Okay, why the pure humidification is not possible? Pure humidification. So because while humidification, some amount of heat will be transited between the surrounding. Because humidification is when the amounts of water vapor or something in the environment, in the desired environment.
So if it is the water vapor will have some heat, so it will change the temperature of the environment in which it is added. So some temperature change would be there. Okay. Okay, let us suppose. Okay, just tell me one thing. Why do we require the refrigeration system in aircraft, even though outside temperature is also is very very low at the high altitude? Okay. Sir, at higher altitude, when we go up the side, then the pressure as well as temperature of the environment decreases. That's why. But it decreases that much, so we require the refrigeration No, system for that that. is okay, but the outside temperature already very very low. So if so, don't you think that we have to use the heat pump there? Why we are using the aircraft refrigeration system? Sir, because first thing is to maintain the pressure, required pressure, because the pressure also decreases. So we have to also to But if maintain you the. see, so we have to also maintain the temperature of the cabin now. Yes, sir. The outside temperature is already very low, and we have to maintain the cabin temperature above that particular temperature here. Okay, let Yes. us suppose at a temperature of 10 to 20 degrees Celsius. Then why don't we require any heat pump there? That is my question. Um, Mhm. uh, Not sure about the answer because the other gas turbine we use because we have the compressor and all arrangements in the system in the helicopter No, and aircraft in that that's not what I am asking. Okay, okay, just tell me one thing. What is relative humidity? What does it represents? relative. Sir, relative humidity represents the moisture or absorbing capacity of the moisture. Moisture absorbing capacity. Okay, and what about the specific humidity So specific humidity tells that what amount of vapor is present in per kg of dry air. per kg of dry air? Okay, okay, that is okay. Okay, just tell me one thing. How the heat transfer take place in the condenser? Heat transfer in the condenser. So in the condenser, when the compressor increases the pressure of the gas refrigerant, then the temperature increases. And in condenser, the refrigerant is at high temperature and surrounding temperature is at low temperature. So heat transfer according to from high temperature to low temperature. Okay. Just show me the TS diagram of actual runtime cycle. Sorry, actual vapor compression refrigeration cycle. Okay, not a Actual theoretical vapor one. compression. Actual. Yes, actual one. Sure. So that dotted one is actual, and then solid line is theoretical. This is not the actual one. Okay, that is okay. Uh, okay, that is okay. Okay, अक्षय लेट मी provide feedback. देखो आपके पास यहाँ पे थ्योरेटिकली चलो आपको आंसर हाँ आंसर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है काफी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो कुछ कुछ जगह पे हल्का हल्का सा जो मिस कर रहे हो उसको एक काम करो उस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है जैसे आपके पास मैंने टीएस डायग्राम आपसे पूछा था ठीक है उसमें क्यों वो प्रेशर अबव हुआ उसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपने वहाँ पे मुझे फ्लैश चैम्बर के बारे में बताया कि फ्लैश चैम्बर का यूज करते हो वीसीआर प्लांट में ठीक है इसके अलावा और कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं कौन से वाल्व यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए था जो एक्चुअल वेपर का प्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपके पास ये नहीं है उसमें प्रेशर ड्रॉप्स भी आपके पास यहाँ पे होते हैं कंडेंसर के अंदर प्रेशर ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है और आपके पास यहाँ पे इवेपोरेटर के एग्जिट पे प्रेशर ड्रॉप आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा डायग्राम आपके पास यहाँ पे बनता है ठीक है ना ये जो Okay. आप आपका जो स्टडी कर रहे हो इसमें आप एक्चुअल कंप्रेशन दिखा के मुझे शो कर रहे हो कि एक्चुअल Yes. कंप्रेशन जब हो रही है तो कैसा डायग्राम बनेगा ठीक है तो एक्चुअल साइकिल थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो आपने मुझे आंसर प्रोवाइड करे रिगार्डिंग दी आपके पास यहाँ पे सेकंड लोगों का काफी अच्छे प्रोवाइड करे बाकी इसमें कोई इशू नहीं था सभी पार्ट भी सही था आपके पास यहाँ पे कोई ओके डाउट हो भी आपको कुछ पूछना हो ये सर जैसे आपने बताया वो हीट पंप का यूज क्यों नहीं करते हैं एयरक्राफ्ट में से उसका आंसर देखो क्या था? आपके पास यहाँ पे जब इवन दो एयरक्राफ्ट जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे मूव कर रहा है लेकिन वहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर भले ही चाहे बहुत नेगेटिव में क्यों ना हो बहुत ही कम फ्लूइडिटी क्यों ना हो लेकिन ड्यू टू ड्रैग काफी ज्यादा हीट जनरेशन होती है सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से आपके पास कैबिन के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ती है ना कि हीट पंप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ओके इसका ध्यान रखना ओके तभी आपके पास कंपोनेंट सही हीट समझ रहे हो जनरेशन। हाँ क्योंकि वहाँ पे हीट आपके पास यहाँ पे हीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है ठीक है ना हीट जनरेशन बहुत ज्यादा हो रही है ड्यू टू ड्रैग जिस वजह से आपके पास वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी रेफ्रिजरेशन सिस्टम ठीक है एंड तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ओके ओके सर नेक्स्ट आउट इज दैट वो प्रेशर जो है डी डब्ल्यूबीटी का वो उनके बीच में वो आता है प्रोसेस थोड़ा वो यार क्यों है? वो थोड़ा सा सोचो आप चलो बता सर मैंने देता हूँ इसको अभी काफी जगह फाइंड किया इसलिए देखो दैट्स व्हाई। होता क्या है जब आप यहाँ पे डेल्टा लो पार्शियल प्रेशर आपने सुना होगा क्या होता यस है सर। डेल्टा लो कि आपके पास यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर है
सो लेट अस सपोज हाँ जब आप मेजर करते हो दैट टेम्परेचर का, तो उस केस में क्या कर रहे हो आप, सराउंडिंग को आप यहाँ पे फोर्सफुली सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हो, हम यहाँ पे वाटर वेपर को वो करके इवेपोरेट करने करके, ठीक है। तो इवेपोरेट जब आप वाटर वेपर को कर रहे हो, तो उस केस में जो पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का वो भी इंक्रीज हो रहा है continuously, जिसकी वजह से जो टोटल प्रेशर है वो हल्का सा इंक्रीमेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी वो कांस्टेंट प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, उससे थोड़ा सा ज्यादा ओके आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू दी डेल्टा लो पार्शियल प्रेशर। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके ओके, ओके, ओके सर ओके, अक्षय, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक ओके। यू।